Okay, so hello everyone and welcome back to another AFA session. So today we are going to start with the new chapter, that is insurance claim. Okay. Now, whenever we talk about insurance, we all once in our life have definitely heard about it, correct? So can you say insurance हम किस चीज का करवाते हैं? इंश्योरेंस हम किस चीज का कराते हैं? Everything that we can think of, correct? But exactly, we do not insure products, or we do not insure goods or our bike or health. We insure the risk against them. Correct. If you have ever seen through the papers and all, okay. So they are actually the we pay a monthly premium towards whatever we have insured. Okay. That premium depends upon the types of losses that I have covered in it. Okay, suppose for an example, if I'm taking insurance of my bike, that means I'm not insuring my bike. I'm insuring risk against my bike. Correct. So what are the risks that I can cover it? That I'm riding the bike. If I have some accident, so for me, if there is some damage for my bike, then to the bike, or one more insurance can be there of the third party insurance, that if I make an accident, okay, and if someone other सामने वाला जिसको मैं ठोक रहा हूँ, okay, the whom I'm making accident, if he is having some losses, so I can repair it. Correct. So depending upon the coverage of risk monthly premium is charged. Okay. Now, whatever insurance we call it, insurance is what? A contract of indemnity. A contract of indemnity. I hope सबको indemnity का मतलब पता है. Okay, it means losses, or I can say that insurance will be paid in accordance of loss. Okay, what I mean to say with this, now suppose for an example, face value of insurance is rupees, say for example 2 lakh. Okay, the loss which I faced, suppose it's rupees 4 lakh. Correct. So amount of insurance we'll receive, how much amount of insurance we'll receive? Maximum we have what we have done. Maximum we have done of 2 lakh. Correct. This is what contract of indemnity tells you, that we won't get for 4 lakh. We will only get amount of insurance of rupees 2 lakh, and in some cases, in fact, less than 2 lakh. Correct. Now, suppose for an example, insurance value is say for example is rupees 8 lakh. Okay, and loss that we have, suppose for an example, it's only 4 lakh. So what is the amount of insurance? Amount of insurance received will be 8 lakh, 4 lakh. Correct. That's what I meant to say. Key. This is what I said. It is a contract of indemnity. Insurance will be paid in accordance of the loss. Correct. That how at first of all, it will depend upon how much insurance have you taken. Okay, for how much risk or for how much loss. Correct.
And after that also it will depend upon actual how much loss you have occurred. Okay, how much loss have occurred. Now suppose for an example, there was A Limited. Okay, a fire occurred in his premises. Okay, stock on the date of fire is suppose rupees 10 lakh. Okay, now when this fire occurred ना, everyone went there and they tried to, उन्होंने सोचा कि देखते कुछ क्या हम कुछ बचा सकते हैं goods, can we save some goods from there ना कुछ goods saved होगा, goods we call it as salvage. Correct. Suppose goods worth 2 lakh were saved. So what is the amount of actual loss? What is the amount of actual loss? It's 10 lakh minus 2 lakh. That is rupees 8. Okay. Now in the same question, I'm adding some more information and will understand few things. Okay. हम बुक की लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, हम बुक की तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम थियोरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकली समझें, ठीक है, बहुत इजी चीज है, ठीक है. Suppose insurance policy was of say rupees 8 lakh, sorry 9 lakh, was of rupees 9 lakh. Okay, calculate the amount of insurance received. There are two methods for it. Okay, calculation. Actually मैम यहाँ पे करते क्या है, ये जो लॉस होता है ना हमको, जिसके जिसके अगेंस्ट हमारा इंश्योरेंस रहता है, वो कैलकुलेट कितना हमको क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा मतलब कितना हम क्लेम रिसीव करेंगे. ओके, तो देयर आर टू क्लॉजेस, वन इज जनरल क्लॉज and second one is average. Okay, at first I'll discuss and do, and next you will solve, I'll give you. So now as per general clause, what actually happens, as per general clause what happens, lower of A actual loss or B insurance amount, insurance policy. Correct, तो बहुत सिंपल है. Correct. What is the actual loss over here? Actual loss is 8 lakh. Correct. And what is the insurance policy amount? 9 lakh. 9 lakh. So what is the lower among them? 8 lakh. 8 lakh. So he will receive an insurance claim of 8 lakh under general fees. Correct. This is claim. Okay. Now, इसी में if I change this, if I say that insurance policy was of rupees 7 lakh. Okay. So how will your answer change? So again under general clause we'll write lower of actual loss or insurance policy. Actual loss is of 8 lakh. Correct. And insurance policy is of
7 lakh. So what is the maximum available to us? It will be, claim will be of, what will be the claim? 7 lakh. Correct. So this is a general clause, okay, where we compare the actual loss and the insurance policy value, okay, and whatever the lower among them, we get that. Okay. Now we'll discuss, which is important for you as well, average clause. Average clause. ठीक है, देखिए एवरेज क्लॉज नाम से ही लग रहा है ना, समथिंग विच विल बी एन एवरेज. करेक्ट. समथिंग विच विल बी इन एवरेज. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, claim will be, see, we have taken a policy value of 9 lakh. Correct. We have taken a policy of 9 lakh on how much goods? On how much goods? 10 lakh. Correct. On the, on 10 lakh. Correct. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, what actually I'm trying to say, कि we would have given you a claim of 9 lakh provided if your goods worth rupees 10 lakh would have been destroyed. Correct. But what actual was destroyed? Only 8 lakh. तो on an average how much will be? It's like that, कि हम आपको 9 लाख का देते, अगर आपका 10 लाख का ही गुड्स खराब, अगर मतलब ये हो जाता, मिट्टी से मतलब जल जाता, लेकिन आपका जला तो नहीं ना, आपका जला तो सिर्फ 8 लाख, तो उसके प्रोपोर्शनेट में हम देंगे तो कितना रही? 7,20,000. करेक्ट. चलिए इसी को फॉर्मूला में लिख देते हैं. तो हमने क्या किया, हमने किया पॉलिसी वैल्यू होल डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ओके, इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक. और एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज वैल्यू. सिंपल है क्या? Yes. चलिए दूसरे वाले का बता दीजिए, जिसमें पॉलिसी वैल्यू 7 लाख का था, उसका क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला बताइए, क्या लिखे? एक ही चेंज है, सिर्फ पॉलिसी वैल्यू 7 लाख का. 7 lakh divided by 10 lakh into 8 lakh. कर कितना आ रहा बताइए? 5,60,000. 5,60,000. ओके. अरे समझ में आया क्या? बोलिए हाँ. Yes, sir. You will solve. Okay. I'm giving you stock on date of fire
5 lakh. Salvage value is nil. Okay. Policy value, say, of rupees 10 lakh. Give me a second. Okay, now let's make it salvage value of 1 lakh. Okay. Calculate claim under A general clause, B average clause. चलिए बताइए. जनरल क्लॉज में हम क्या करते हैं? Sir, lower of the actual loss of stock and the policy claim value. What is the actual loss? 4 lakh. What will be the claim? 4 lakh. And good. Second one, average clause. क्या लिखेंगे इसका? 10 lakh divided by 5 lakh into 4 lakh. कितना आ रहा है? 8 lakh. 8 lakh. This is what I wanted to know. अब बताइए, when I have a loss of only 4 lakh, do you think insurance company will pay me 8 lakh? यही तो मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सो though it is 8 lakh, okay, it won't be 8 lakh, it will be 4 lakh only. Maximum they can pay is up to your loss, actual loss. उससे ज्यादा नहीं पे करेंगे, किसी भी क्लॉज में कुछ भी आ जाए. Okay, so whenever you will find out a clause, okay, whenever you have found out a claim, you have to now check, compare this loss with the actual loss, because this claim cannot be more than your actual loss. यही समझाना था. समझ में आया? Yes, sir. Maximum loss, maximum claim can be actual loss of stock. Okay. तो ये तो सिंपल था ना, ये तो इसमें तो कुछ था भी नहीं. करेक्ट. ये तो पकड़ने से पहले कंप्लीट हो गया. करेक्ट. यही आता है. तो आप बोलोगे सर इतना इजी आता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, इतना इजी नहीं. पता क्या कर सकता है? व्हाट एक्चुअली दे कैन डू, समटाइम्स ना, दे विल नॉट गिव यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. ये गायब कर देंगे. ओके, दे विल हाइड दिस, दैट व्हाट एक्चुअली इज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. तो मुझे एक चीज बताइए कि इस स्टॉक को हम कहीं से निकाल सकते हैं अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो तो? Yes, sir. ओके. डू यू रिमेंबर ट्रेडिंग अकाउंट? Hmm. ट्रेडिंग अकाउंट क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में is to write to opening stock, to opening stock,
to purchase, correct, to purchase return, to direct expenses, buy sales, correct, then we write to gross profit, so we write buy closing stock. Now tell me, if all this data are given, cannot we find out this closing stock? निकल जाएगा ना? अरे निकलेगा ना? Okay. Yes. तो ये जो हम ट्रेडिंग बनाते हैं ना, we do not call it trading account, we call it memorandum trading account for the period ended जिस दिन ये आग लगेगी. ओके, जिस दिन आग लगेगी, क्योंकि मेमोरेंडम होता है ना, हमने बोला था ना ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं, जब हम एट ईयर एंड जो बनाते हैं. करेक्ट. So simple, if you get this details, so we can easily calculate कि how much is my stock on the date of fire. Correct. उसके बाद we can do, correct. अब बोलोगे सर ये भी तो easy था, कहाँ tough था. Correct. This was also easy. So this has to be done when stock on date of fire is missing and other details till date of fire is given. Correct. It's very simple. समझ में आ गया ना? चलो, ये तो हो गया एक तरीका. ठीक है, एक हो गया एवरीथिंग विल बी गिवन, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द क्लेम. वन विल बी दैट क्लोजिंग स्टॉक विल बी मिसिंग, यू हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. पता और क्या टफ कर सकते, इफ दे वांट टू इंक्रीज. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स. ओके. अब इनको 8 मार्क्स, 10 मार्क्स या 12 मार्क्स का करना हो तो पता है क्या करेंगे, ये इसी में डिटेल्स बता देंगे और ये ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे. दे विल हाइड दिस ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल. तो ये कैसे निकलेगा? ठीक है. So what actually they will do now, then they will provide previous year's detail. ठीक है, वो प्रीवियस ईयर का डिटेल बता देंगे. तो क्या करेंगे हम, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट लेके आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे. करेक्ट. अच्छा, देर इन जब हम बहुत छोटे 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 बच्चे थे, तो हैव यू हर्ड, ये कभी किया था आपने, इफ जीपी इज 1 or half of cost, then it is equal to 1/3 of sales. Right? We have done this. याद है क्या? याद है, याद है. कहाँ याद होगा सर, क्या सर आप भी. Yes, sir. याद है. अरे वाह. So is actually what does it means? When GP is 1, then cost is 2. Correct. So if my cost is 2, my GP is 1, so what is my sales? It's 3. Correct. Now if you have to, if we have to find it the cost, so what we can do, or can I, or cannot I say that 2 cost of 2 is equal to 1/3 of sales? Correct. Now if I say that, okay, if I say my GP is 1/4 of cost, so that means how much of sales? How much of sales? कितना जाए? Use the same logic. If GP is 1, cost is 4. So if cost is 4, GP is 1, that means sales is 5. So cannot I say 1/5 of sales? Correct. Now if I say my GP is
2/3 of cost. Then how much of sales? क्या हो गया? So if cost is 3, my GP is 2, so my profit is, my sales is 5. So can I say 2/5? हाँ, चलिए अब मैं बोलता हूँ GP is half of sales. So how much of cost? देखिए क्या बोल रहा हूँ. GP is 1, then sales is 2. When GP is 1, then sales is 2. So how much is the cost? 1. 1. Correct. So 1/1 तो होता नहीं है logically. Correct. So let's make it 3. तो देखिए हम क्या करते थे, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ. हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर, हाउ डू आई रिमेंबर इट. Whenever it will be from cost to sales na, then this will be added and put into denominator. See, 1 plus 4 5 5, 2 plus 3 5 5. Numerator remains the same, but whenever it will be on sales na, it will reduce. क्यों? क्योंकि देखिए when sales is 3, GP is 1, that means cost is 2. Correct. So it will be कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2. सेल से कॉस्ट आएंगे तो 1 माइनस करेंगे. Okay, so now if I say that my GP is 2/6 of sales, so how much of cost? Half of cost. कितना? हाफ? हाँ मतलब रिड्यूस करके. नहीं रिड्यूस करने की जरूरत नहीं. 6, GP is 2, so it is 4, so it will be 2/4 of cost. Okay, why I'm spending time over here? क्योंकि ये सारी चीजें आएंगी. ठीक है, तो हो सकता है तभी जल्दी जल्दी में मैं डिस्कस ना कर पाऊँ, इलस्ट्रेशंस कर रहा हूँ. ठीक है, बाकी ये क्लियर है. ऐसा भी हमको लॉजिक लगा के करना पड़ सकता. So what we have discussed till now is that we only have discussed actual terms. ठीक है, how actually the sums work. Okay, so now what we'll do, we'll bring out an illustration and we'll try कि हमसे हो रहा है कि. Okay, we'll brought out an illustration and we'll try. Okay, so this is the illustration. We'll solve it. Now see. A fire occurred on 15 September. Okay, we are doing loss of stock. Okay, whenever there will be loss of stock. So a fire occurred on 15 September 2013 in the premises of CMA and Company. From the following figures, calculate the amount of claim to be logged with the insurance company for loss of stock. Okay, so 15 September 2013. So stock at cost on 1/1/2012. That means this is what? This is the opening stock. Okay, stock at cost on 1/1/2013. Okay, no, sorry, this is the opening stock. 15. This is the last year opening stock. Okay, and this is the current year opening stock. Okay, purchase in 2012. Okay, purchase from 1/1/2012 to 15/9/2013. That means till the date of file. Sales in 2012. Okay, sales in till the date of file. During the current year, the cost of purchase has risen by 10%. By above last year's level. Selling price has gone up by 5%. So, salvage value of the goods after fire was 4,000. Okay. So what we have to do? We have to prepare a memorandum trading account. Okay. So first we have to prepare trading account for last year. So we'll write memorandum. क्योंकि देखिए GP का percentage नहीं दिया. Correct. So I have to prepare last year's. Then we have to brought out GP from there to here. Okay. तो यहाँ पे मेमोरेंडम नहीं लिखते, इसको नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट लिखते. ट्रेडिंग अकाउंट. ओके,
for the year ended 31st 12 2012. Okay. Okay. ये देखिए, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/1/2012, दैट मीन्स ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। ओके, अब देखिए परचेज इन 2012 क्या है, परचेज इन 2012 इज 80,000। ओके, टू परचेजेस ऑफ 80,000। ओके, सेल्स इन ईयर 2012 इज 1,20,000 बाई सेल्स 1,20,000। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, दिस स्टॉक on 1/1/2013, won't it be the last year's closing stock as well? By closing stock कितना 60,000 का, will get the GP कितना आ रहा है 60,000 और 1,80,000 है टोटल, 1,80,000 1,80,000। Now see, if I have to calculate the percentage of GP, so what can I do? Percentage of GP, so we know what it is GP by sales into 100. So GP is 60,000, sales is 1,20,000 into 100, so GP is 50%. 50%. Okay, now what we have to do, we have to prepare memorandum trading account till the date of file. So we'll do memorandum trading account for the period ended when fire occurred 15th September 2013. Okay, for the period ended 15th September 2013. चलिए, ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिख रहा है किसी को बताइए, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग है, करेक्ट? So I'll write two opening stock 60,000. Okay, now see, ये परचेजेस रहा, दिस इज द परचेजेस फ्रॉम 1/1/2012, 1/1/2012 और 1/1/2013 it will be. Okay, make it 1/1/2013. Okay, I think there is some printing mistake. ठीक है, पिछले साल से सेल कैसे परचेज कैसे हो सकता, तो 80,000 माइनस करके लेना पड़ेगा। Okay, so we'll make it 1/1/2013. Okay, so that means to purchase is of कितना था 1,76,000, 1,76,000. देखिए, sales are also given, सेल्स इज ऑफ 2 लाख। हाँ देखिए, इसमें डेट 1/1/2013 में दिया 2,10,000। ओके, विल बी 2,10,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। बताइए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है कहीं क्लोजिंग स्टॉक?
नहीं दिख रहा, कोई आइडिया कैसे क्या बोल Average सकते? value of stock. नहीं नहीं, सैलवेज वैल्यू तो वो तो बच गया, क्या बात कर? Hmm. देखिए क्या हो रहा है मैं बताता हूं। देखिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए स्टॉक एट लास्ट ईयर क्या था, 60,000, करेक्ट? स्टॉक एट लास्ट ईयर क्या था, 60,000। देखिए यहाँ की इंफॉर्मेशन में कुछ बोला है, they have said something in the information. During the current year, cost of purchase has risen by 10% above last year's level. Correct. तो पिछले साल अगर 10% कम करके, okay, if the purchase price was less than 10%, so we had a closing stock of 60,000. So this year, if we have more 10% increase, so don't you think that 66,000 will be my closing stock? बताइए, एग्री करते हैं कि नहीं? पहले इस पर बात करते हैं, उसके बाद विल मूव अहेड, विल डिस्कस। अगर लास्ट ईयर 10% परचेज प्राइस कम था, देन ऑल्सो वी हैड ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 60,000। डोंट यू थिंक कि इस साल अगर 10% से बढ़ेगा तो 66,000 का क्लोजिंग स्टॉक होगा? Hmm. हम्म, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ। सो वी गॉट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 66,000, करेक्ट? Okay, sir. 66,000, तो व्हाट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट? और यू कैन डू वन मोर थिंग ना। व्हाट मोर यू कैन डू वन थिंग ना, ये क्लोजिंग स्टॉक को अपन इधर जाने देते। ओके, don't use this way. Let's see one thing. To gross profit, we know gross profit is what? 50% of sales. So if sales is 2 lakh 10, so what will be my gross profit? हमने ऊपर से One निकाल lakh 5,000. 1,05,000, तो क्या 1,05,000 पूरा बिठा देना चाहिए? पहले ये बताओ। हम बिठा देना चाहिए ना। चलिए, सो कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक बताइए? 60,000, 76 प्लस 5,000 माइनस 2 lakh 10,000, so it's 1,31,000, correct? Yes, sir. 1,31,000, this is the balancing figure। इसका टोटल कितना है? 3,41,000। Stock purchase sales, I think we have forgotten something, give me a second। प्लस
their selling price has gone up by 5% now. चलिए जाने दीजिए, we'll keep it here, no worries. It's also not wrong. Okay, so इसको हटा दीजिए. ये अपन अगर both here का ट्रेडिंग लेके चलते हैं ना तो जरूरत पड़े, but we are not taking both here trading together. Okay, so amount of claim will be what? Amount of claim. Now see, in the whole question, you will see that nowhere policy value and nothing has been written, correct? So what we'll assume कि जितना loss होगा उतना ही claim होगा, correct? So what was the closing stock? 1,31,000. Closing stock was of 1,31,000. Okay, less salvage value of how much? Of 4,000. So what it is coming to be? 1,27,000. 1,27,000 is actual loss. Actual loss. So we don't know the policy value. We don't know क्या clause apply करना. तो claim will be equal to value of actual stock loss. That is 1,27,000. Okay. Anywhere if claim is not given, insurance policy value कुछ नहीं बता, तो आप हम ये assume करेंगे जितना actual loss हो रहा है उतना ही इनको नुकसान भरना पड़ेगा. Okay. Only one thing has to be changed, that 1/1/2013 has to be made. Okay. इसी illustration को ना I'll solve it. I'll show you one more way of solve it. Okay. ताकि जो बुक में किया हुआ आपको वो पता चल जाएगा. Okay. If you see the book, you will have a 1,000 difference with that. But that is done with some another assumption. वो मैंने आपको अभी नहीं करा है. Okay. Once we'll do that, we'll get it. Okay. Yes, sir. Let's find out some more illustration. Okay, so this is your illustration 29. We'll do this. Okay, so let's first read it. Mr. X godown was destroyed by a fire on 1st of June 2013, and the goods in stock were insured for 60,000. Okay, so we have got the policy value of 60,000. Okay, the following particulars are given. Balance sheet one extract is given on 31st December 2012. That means last year's. Liabilities, creditor for goods 20,000, stock including goods held by agent, that is of 2,000, that is 36,000, and debtors are of 70,000. The transaction of the 31st May 2030, okay, just before the date of fire. Cash received from debtors, okay, bad debts written off, correct. Balances of debtor and creditors are given, cash paid to creditor and discount received is given. Okay. Additional information, debtors on 31st May 2013 included an amount owing from the agent from sales to date 4,000 less 10% commission and his expenses amounting to be 100. Okay. Correct. Debtors में जो amount है ना, from there one amount belongs to the agent of 4,000 less 10% commission and his expenses of 100. The agent still held the said goods valued at 3,600 at selling price. Okay. Sales, that is total for the periods, includes 1,600 for goods which have the selling price reduced by 15%. So my original cost was 3,200. Also for 6,000 reduced by 25%. So what will be the original value? Agar 25% se reduce, that means it will be 8,000. Correct. That means 3,200 के goods 1,600 में बिके और 8,000 के goods 6,000 में बिके. चलो. The normal mark up is 50% on cost except the above.
50% of cost means half of cost. Okay, all sales can be assumed to be full selling price, or all sales can be assumed to be at the full selling price. So if cost is 1/2, so sales will be 1/3 sales. Okay, you have to keep this idea ready. All the goods were destroyed and there was no salvage value of goods. Calculate the amount of claim. Correct. So before claim, don't you think we have to adjust these debtors? They have something which related to agent. Correct. So what we have to do, it is Mr. X. So at first we have to prepare a debtor account in the books of Mr. A, debtors account. मैं पैदाइशी टेढ़ा हूँ क्या? टेढ़ा ही कैसे? चलिए, नासिक 1/5 का तो छोड़ देते हैं. This is the last year's date, so it will be opening balance for this year. Yes, participate करिएगा, ठीक है? Yes, ताकि sir. मुझे लगे आप लोग समझ रहे. Okay, so this is the opening balance and debtor has a debit balance. So what we'll write? Two balance BD. 70,000. Two balance BD of 70,000. Okay. अब देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए, जो सेल्स होगा वो डेटर्स अकाउंट में घुसेगा कि नहीं? आएगा ना? तो वो सेल्स क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स. हाँ. Cash received from debtors, so it will be nothing but sales only. Nothing but sales only. Okay, यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा. ओके, डोंट वरी, इसको रेडी रखिए. ठीक है, यही आएगा, लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट अदर थिंग्स एज वेल. देखिए, इस साइड में क्या होगा? बाय कैश रिसीव, बाय कैश जो रिसीव करेंगे. सबसे पहले तो हमने क्या रिसीव किया? 3,40,000. ओके, ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स. अब देखिए, बैड डेट दिख रहा है आपको कहीं पे? Correct. This is the bad debt. Bad debt is written off, so it will also go to the credit side. Debtors. By bad debt, this is written off 3,500. Now see, now comes the treatment. Main treatment जो है ये पढ़िए. Debtors on 31st of May to the included amount owing from the agent from sales. इसका मतलब कुछ एजेंट का भी अमाउंट है, कुछ एजेंट के पास है. ओके, सो हैव टू कैलकुलेट कि एजेंट के पास है क्या. So what we have to do? We have to go and prepare and stock with agent. इसका एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, देखिए, एजेंट फ्रॉम सेल्स डेटेड 4,000. ओके, एजेंट के पास जो स्टॉक है ना, मतलब जो सेल किया उसने टोटल, वो 4,000 का किया. ओके, सो नाउ सी द सेम point of view. If sales is 4,000, if sales is 4,000, which is just a second, the agent still held goods valued at 3,600 at selling price. क्या मुझे कोई बता सकता है ये सेल्स कितना है?
ये देखिए, इसको एक बार हटा दीजिए। द नॉर्मल मार्कअप इज 50% ऑन कॉस्ट एक्सेप्ट द अबव। ओके, 50% ऑन कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट पे 50% है तो सेल्स पे कितना है? हाफ। अगर सेल्स हाफ है तो कॉस्ट कितना है? इफ सेल्स इज हाफ देन कॉस्ट इज व्हाट? 2/3। करेक्ट। इफ सेल्स इज 4,000 देन कॉस्ट ऑफ 2/3 विल बी कितना हो जाएगा? 2/3 of 4,000. कितना हो जाएगा? 4,000. 8,000 divided by 3. 2,667. 2,667, which is Hmm. nothing but 4,000 into 2/3. Correct. Now see, Hmm. he still holds the good of 3,600 at a selling price. So if selling price is 3,600, then what will be the cost? If selling price is 3,600, so what will be the cost? Again same, 2/3, huh? 2,400. 3,600 into 2/3, which is nothing but 2,400. Okay. Hmm. So what is the total goods that he holds? 4, 6, 10, 5,067. Correct. Hmm. So Hmm. can I say that this is the stock which is with him? But no, नहीं बोल सकते. क्यों? See here, see here. When last year data was there, ना, there only it is said that including goods held by the agent of 2,000. तो पिछले साल पे 2,000 already held है इसके पास. Correct. So less previous year stock of 2,000. So what actually is holding? Then current year 3,067 stock with him. Stock with him. और ये भी डेटर का ही पार्ट है. He is also included in debtors only. ये जब मैं स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा वहां दिखेगा कि नहीं? दिखेगा सर. दिखेगा. मुझे एक चीज बताइए. Say this is current year's debtor. So if my current year's debtor is 70,000 and among these debtors 3067 3067, ये फिगर थोड़ा अटपट लग रहा है मुझे. कैलकुलेशन सही है ना? एक बार चेक कर लीजिए ना प्लस माइनस करके. एक मिनट सर. Hmm. 266. हाँ सर सही है. सही है. हम्म. चलिए, अगर सही है तो फिर कुछ नहीं कर सकते. फिर तो कुछ नहीं कर सकते. चलिए, बैड डेट तो हमने कर दिया है. Okay. Okay. Now we'll do we have done bad debt, but then also see हमने कौन सा bad debt लिखा है? Which was already said it is written up. Correct. Which has Yes. already said it is written up. But see now, जो डेटर्स का था इसमें से 4,000 जो था वो एजेंट ने सेल किया. ओके. सो आई एम राइटिंग सेल्स बाय एजेंट. एक बार देख लीजिए.
अगर डाउट हो तो, ठीक है। इस 4000 में से 10% was his commission, ओके। इसमें से इसका कमीशन था, तो ही विल डिडक्ट द कमीशन एट द रेट 10%, जो कितना होता है 400. He also has made some expenses. I'm showing you it of 100. See here, 10% commission and his expenses amounting to 100. करेक्ट। तो इसको इसमें से 4000 में से इसने इसको बेचा कितने में? 3500 में, ओके। ये 3500 में आया कि नहीं? अच्छा, मैंने तो गलती से ये वाला पहले लिख दिया था, आपको पहले बताना चाहिए था। बैड डेज रिटर्न ऑफ क्या डेटर अकाउंट में आता है? कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। सो दिस बैड डेट इज बेसिकली दिस वन, कि जो 4000 एजेंट के पास था, what actually was with agent, how much has actually sold, okay. Keep this data ready with you, okay. This is okay. Now let's come to our this account. अच्छा, अच्छा, अगर कैश रिसीव्ड इनका जो है नहीं, तो ये बताइए मुझे एक चीज कि क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी? 70,000 इज गिवन, ओके। 70, यही तो है ना इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, 70,000, आउट ऑफ विच जिसमें से एक 4000 का गुड्स था जो 3500 में बिका, तो ये निकल जाना चाहिए कि नहीं? Shouldn't it be deducted? Yes, sir. करेक्ट। तो कितना आएगा ये? सो व्हाट आई एम सेइंग, 70,000 में से हमको एक्चुअली में 4000 माइनस करना था, लेकिन एक्चुअली इट बिलोंग्स टू एजेंट। सी डेटर्स जो इतने में था, फ्रॉम देयर 4000 बिलोंग्स टू एजेंट, लेकिन उसमें से भी इसने कुछ काटा है और फिर हमको रिटर्न दिया, तो 3500 हम डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 66,500. 66,500। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टू सेल्स विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर। Yes, sir. और यही तो हमको निकालना था, हमको सेल्स निकालना है, परचेज निकालना है। डेटर्स सेल्स निकलेगा डेटर्स अकाउंट से, परचेज निकलेगा क्रेडिटर्स अकाउंट से। वंस वी गेट द सेल्स एंड परचेज, वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट और वट एवर अकाउंट इज नीडेड, करेक्ट। तो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? Sir, 3,40,000. मैंने पहले ही बोले 340 आना ही है इसको, तो इट विल बी 4,10,000, Hmm. इट विल बी 4,10,000, ओके। नाउ सेल्स, अब क्रेडिटर्स पे आएंगे तो सेल्स आएंगे, सो विल प्रिपेयर अ क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ भी सेम आइडियोलॉजी से होगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज, क्रेडिटर इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, तो Hmm. बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, 20,000. कितना था नेट? 20,000. प्रीवियस ईयर का ना, Hmm. 20,000, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, दिस बिलोंग्स टू क्रेडिटर्स और डेटर्स? क्रेडिटर, सेल करेंगे तभी डिस्काउंट मिलेगा. मिलेगा। Hmm. टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इट विल 1,000. 1,000। Any payment to creditors have been said or not?
Cash paid to creditors. Cash paid to creditors. 2,20,000. Debit side. To cash paid 2,20,000. Okay. Closing balance is given. इसमें देखिए Credit. इसमें कुछ नहीं बोला हुआ, करेक्ट. सो इट्स वेरी सिंपल. टू बैलेंस CD कितना था? 30,000. 30,000. So we'll get by purchases. This is nothing but balancing figure. कितना आएगा? 2 lakh 2,40,000. 31,000. हाँ? 31. 2,31,000. 51 है ना? 2,31,000. 2,31,000. So it's 2,50,000. 1,000. 2,51,000. Now see, we have got sales, we have got purchase. Correct. Where it is? We have got this sales, we have got the purchase. Correct. तो क्या बना ले तो काम हो जाएगा. एक स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकल जाएगा. So we'll prepare स्टॉक अकाउंट. अब इसमें सिर्फ आपको डेटा इंपोर्ट ही करना. ओके. द मेन झमेला वाज विथ डेटर्स अकाउंट, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट. चलिए. देखिए ओपनिंग स्टॉक कहीं दिख रहा है पूरे क्वेश्चन. सर 36,000 का स्टॉक है ना जो कहाँ? बैलेंस शीट में. हाँ, बैलेंस शीट. तो वो क्या है? वही है. ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ना करंट ईयर वही का. वही आएगा, वही आएगा. लेकिन क्या 36,000 पूरा आएगा? नहीं, उसमें से 2,000 माइनस करके आएगा. करेक्ट. यही तो जानना था. तो टू बैलेंस PD will be 36,000 minus 2,000, so 34,000. करेक्ट. यस. अब बताइए जो परचेस किया है इससे स्टॉक बढ़ता है कि नहीं? बढ़ेगा. तो क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिट अकाउंट से आ रहा है ना. टू क्रेडिटर्स कितना है? 2,31,000. 31,000. 31,000. अब देखिए, एक तो हमने ऑलरेडी बाई स्टॉक विथ एजेंट हमने निकाल के रखा. 3067. 3067. 67. 3067. अब हमको क्या निकालना है पता? बाई COGS निकालना, कॉस्ट ऑफ गुड्स. वाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों निकालना है? क्योंकि एवरीवेयर इट इज सेड दैट, नाउ सी, we know that our total sales is of 3,40,000. correct. but out of that कहाँ गया see, out of that this is what total sales 1,600 है, जो कि 3,200 का था, reduced by 50%, 6,000 reduced by 25%. इसका भी तो एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना, तभी तुमको कॉस्ट मिलेगा इसका. Yes, 2/3 कॉस्ट करना पड़ेगा ना एवरीवेयर. So we are doing we are preparing COGS, cost of goods sold. Okay. So let's do one thing. We take the sales, which is in total is 3,40,000. Okay. Selling price and cost. Correct. Now see this, when sales also was of 1,600, selling price was of 3,200. So cost क्या? 2/3. करेक्ट. ये देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ 1,600 का सेल हुआ था. ओके, which have the selling price reduced by 50%.
So that means original selling price was what? 3200, correct? अब 3200 into 2/3 करेंगे तो cost कितना आ रहा है? 3200 into 2/3, 1 4 14 28, 2133 आ रहा है क्या? Yes, sir. 2133. Now 6000 के goods were 6000 reduced by 25%. Okay. So when sales is 6000, okay, it is reduced by 25%. That means 8000. So 8000 into 2/3 will be what? 3 2 21. अरे ये बताना पड़ेगा, ये मुंह से नहीं होगा. This is 75% of total cost, okay, and this is 50% of. Sir, 6,000 is after the reduction, no? हाँ 6000. No, no, no. After the reduction of 25%. तो आप क्या कर सकते हैं? 6000 into 100 by 75 करेंगे तो हो जाएगा ना. देख लीजिए 8000 आ रहा है कि नहीं, तसल्ली कर लीजिए एक बार. हाँ आ रहा है. चलिए ये कितना आ रहा है? 8000 into 2/3. बहुत भयानक फिगर है. 2 divided by 5333. 3333. 5333. 5333. करेक्ट. और क्या सेल्स में और कुछ दिया? एनी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स? नो, नहीं दिया. करेक्ट. So can I say that rest is what? 340 minus 16 minus 6000. तो कितना होगा? 340,000 minus 16 minus 6000. 32 332 400. Yes, sir. 332,400. 332 400 400. is balancing figure. It is in the selling price. तो इसी का क्या हो जाएगा? 332,400 into 2/3. 2,21,600. 2,21,600. 600. तो टोटल कितना आ गया? 21,600 plus 5,333. I'm extremely sorry. So 2,29,066. 2,29,066. 66. This is, यही है COGS. Cost of goods sold. 2,29,066 बोला ना? जी. 2,29,066. करेक्ट. हम्म. तो अब मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं बोल सकता हूँ अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकलेगा? हाँ कह सकते हैं. नहीं नहीं, कह नहीं सकते हैं. कहें क्या? मतलब यही होगा. चल, मैं सवाल ही गलत पूछता हूँ, मुझे पता है. मुझे ऐसा पोजीशन नहीं चाहिए. 34,000 ना, minus 2,966. नहीं नहीं कुछ गड़बड़. 65,000. 32,867. 32,000. 800. रे बप्पा. 32,867. 67. Correct. Now policy value was of what amount? Policy 60,000. And loss is 38,000 something. Correct. So no clauses are given. So what we'll do? We'll apply the general clause. Correct. So amount of claim will nothing but we can directly write that 32,860. 880. हाँ sorry 67. अरे समझ में आया? बोली हाँ. हाँ सर आया.
थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा लेकिन आ गए। ये एक्सट्रीम सम। इसके बाद अगर आप बुक में देखेंगे ना, इतना टफ नहीं। ये ऐसा है कि इन्होंने छू के बता दिया कि देखिए हम ये भी कर सकते। ठीक, लेकिन इसके बाद नहीं। ओके, तो ऐसा करता हूं मैं ना, इलस्ट्रेशन 29 हमने किया, ठीक है। इलस्ट्रेशन नहीं, 28 हमने किया। 29 इजी है। ओके, 29 इज वेरी इजी। 30 is easy. 31 is also 30 is also easy. 31 is easy. 32 I'll do it in the next session. Okay. To 30 no, sorry 31 I'll do it in the next session. Okay. इसमें abnormal loss का treatment है, वो मैंने आपको बताया नहीं है. So once we do it, we'll get it. 32 is easy. Or after 31 you can do 32 alone only. Okay. Good. Okay. So already it's near about 9. So मैं और ज़्यादा time नहीं लूँगा. Okay. So try out 29 and 30. 31 I'll do it in the next session. Then we'll move on to the loss of stock. Okay. So Okay, sir. 29. This is 28. This is 28. Illustration 29 and 30 will be on your part. In next session with 30 with illustration 30. Okay. बहुत सिंपल है. ओके, यू जस्ट हैव टू थिंक. ठीक है, क्या पॉसिबली क्या चीजें हो सकती, बिकॉज आई नो वेयर द मेन प्रॉब्लम विल अराइज विल ओवर हियर. ये कैसे बना सर स्टॉक विथ एजेंट? यही एक चीज था जो पकड़ने वाली चीज थी. रादर देन दैट एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. Okay. So for today we'll keep it up to here. We'll again continue in the next session. We'll do illustration 31 first, and then we'll move on to loss of profit. Okay. Yes, sir.